Hi friends, welcome to everyone. आमे हमरो प्रीवियस वीडियो रे 2017 आसीथिबा OAVS TGT मैथ रो क्वेश्चन नंबर 1 रो 10 पर्यंत डिस्कशन करिथिले। एही वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 11 रो 20 पर्यंत डिस्कशन करिबा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहिछि 6x minus 7 upon 4 plus 3x minus 5 upon 7 which equals to 5x plus 78 upon 28. Then find the value of x. We have to find out the value of x. जदि हम ताको सॉल्व करिवा त लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम केते हिजबो 28 that is 7 into 6x minus 7 plus 4 whole into 3x minus 5 which equals to 5x plus 78 divided by 28. It can further solve kale kete paiba 42x minus 49 plus 12x minus 15 whole divided by 28 which equals to 5x plus 78 upon 28. 28 will be cancelled out, that is 42x plus 12x. Eta kete aschibo 4 5 4 plus 1 that is 54. 54x minus 49 minus 15 जोटा को सॉल्व करले केते आछिबो minus 4 carry 1 64 which equals to 5x plus 78 implies 54x minus 5x which equals to 78 plus 64 implies 49x equals to eta kete aschibo 49x equals to 78 plus 64 2 carry 1 142. Clear? Yes or no? Implies जोटा को फर्दर सॉल्व करके पाई जिबा 78 it is 78 plus minus 49 plus 4 5 is 20. This one is 20 not 15. 4 5 are 20. This is also minus 49 minus 20, it will be minus 69, so it will be 78, it will be 69. So 78 plus 69, 78 plus 69 kete hijibo 7 carry 1 147 implies x equals to 147 upon 49 which equals to 3. Clear? कहना 49 ने 3 को मल्टीप्लाई करले केते आछिबो 3 चौ 12 2 लाइक को 3 3 9 27 17 कनला 2 3 चौ 12 2 14 147 that is 3. Hence option 3 will be the right answer. Clear? Now come to the question number 12. Question number 12 kon koiche frustum of cone can be determined by using the formula. तले इधर को formula straight forward formula को जाचे आमे जंचे frustum रो फिगर केमति बा एटा हो जोटे frustum रो फिगर जदि एटा आर हाइट लेट इट बी h हुए जदि एटा बड़ सर्किल रो रेडियस suppose एटा जदि कैपिटल r हुए एवं एटा जदि स्मॉल r हुए then at that time the volume of this frustum will be 1 by 3. आमे जानछु कोन वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम रो फॉर्मूला कोन 1 by 3 phi whole into capital R square plus capital R into small r plus small r square whole into h. एटा होची वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम रो फॉर्मूला त एटा कोठी अछि v equals to pi h by 3. एटा को मॉडिफाइड करी केन लिख परिबा pi h upon 3 h टा को पाको को नै आसीबा whole into r square plus small r into capital R into r square. Clear? Hence option 2 will be the right answer. Clear? जेतु एटा pi h by 3 देछि ठीक अछि बट एटे माइनस r स्क्वायर सैछि एटा रंग हे जिवो जेतु एटे 4 pi h देछि एटा मध्ये रंग हे जिवो pi h by 2 देछि एटा मध्ये रंग हे जिवो तले के सेला option 2 will be the right answer. Now come to the question number 13. Question number 13 को कहिछि rationalize the denominator. तले क्वेश्चन एक्सप्रेशन केते अछि -7 upon 6 plus root 2. आर डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करबा केमती तार कंजुगेट को मल्टीप्लाई करनबा 6 minus root 2 तो मल्टीप्लाई करले केते हिजो -42 plus 7 root 2 whole divided by 36 minus 2 ओडे केते आछिबो 7 root 2
minus 42 upon 34. Clear? Now come to the question number 14. Question number 14 goes, if two lines are parallel, then how many solutions are there? जोटाक parallel तो कई क्या इंटरसेक्ट करबनी यदि इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं ताल तंकर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिवो कि सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग करबनी hence there is no solution. That is option 3 will be the right answer. Now come to the question number 15. Question number 15 कौन कहूचे 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of a which triangle? That means तीनटा vertices देइचे. Suppose गोटे triangle में draw करने ले जहाँ देइचे first vertex देइचे 5 minus 2 एटा है 6 4 और एटा देइचे 7 minus 2. ताले triangle टी whether it is a right angle triangle or isosceles triangle or scalene triangle or equilateral triangle एटा हमको find out करिवार अछि. तो हमें कौन करिवा तार distance तीनटा को distance find out करे let it be a, let it be b, let it be c. At first ab रो distance केते आछि ab रो हम यदि distance calculate करिवा x2 minus x1 square that is minus 1 square plus minus 2 minus 4 that is minus 6 square. जो आंसर केते आसीबो 1 plus 36 रो root over that is root 37. Similarly BC रो length केते आसीबो BC रो length केते आसीबो 7 6 minus 1 square that is 1 plus minus 2 minus 4 that is minus 6 रो square root over that is root 37. Again CA केते आसीबो CA रो length केते आसीबो x2 minus x1 minus 2 रो square plus minus 2 0 square that is root over of 4 that is 2. Clear? हमें देखु जे कोन एठी AB रो लेंथ सहित कहार लेंथ इक्वल आछि BC रो लेंथ सहित BC रो लेंथ इक्वल आछि ताले एटा को ट्रायंगल हिजबो आइसोस्केल ट्रायंगल. Clear? Now come to the question number 16. Question number 16 को कहूची one real root of the equation x cube plus x minus 5 equals to 0 lies in the interval. ताले हमें जानछु गोटे कांसेप्ट कोन IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को कहूची जदि कोन से फंक्शन f of x दीची एवं जदि f of a into f of b negative आछि at that time we can say the function or this polynomial have a root lies between have a root or having a root which is lies between open interval ab. Clear? Concept कोन हला गोटे फंक्शन देची f of x cube plus x minus 5. तो हम at first f of 0 put करिवा f of 0 put कले केते आसीबा minus 5. f of 1 put करिवा f of 1 put कले केते पाइबा 1 plus 1 minus 5 that is minus 3. f of 2 put करिवा f of 2 put कले केते पाइबा 8 plus 2 minus 5 equals to 5. तन को कहली हमें एमती सब डिफरेंस वैल्यू पुट करिवा जो जगह रे f of a into f of b नेगेटिव आसीबो एठी माइनस दुटा को प्रोडक्ट कले केते आछि पॉजिटिव एठी नेगेटिव एठी पॉजिटिव बर्तन एठी जदि हमें f of 1 into f of 2 को प्रोडक्ट करिवा हम आंसर कोन आसीबो नेगेटिव ही आसीबो कहिना -3 into 5 कले केते आसीबो -15 चाहे जोटा भी जे कोनसी बस दुइटा को प्रोडक्ट कला पर f of a into f of b प्रोडक्ट कला पर कोन आस्तु दरकार नेगेटिव आस्तु दरकार जदि नेगेटिव आसला at that time we can say then this polynomial has a root which is lies between open interval 1 comma 2. एटे मतलब ओपन इंटरवल ए बी भीतर लाइज करबे तार उटे सॉल्यूशन तले एठी जेहेतु f of 1 f of 2 जेहेतु नेगेटिव आछी तले जो पॉलिनोमियल बा इक्वेशन गोटे रूट्स काहारु का भीतर लाइज करबो ओपन इंटरवल 1 2 भीतर लाइज करबो. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 17 बस कांसेप्ट एटी कोन ला आईवीटी रो कांसेप्ट कोन ला उथरे कोइ नउची गोटे फंक्शन देछि f of x तो हमें से जगह रे x जगह रे डिफरेंस वैल्यू पुट करबा आ जेतेबेला बे देखितबा f of a into f of b जदि तार प्रोडक्टटा नेगेटिव आसला देन से समय में कहि परिबा दे जो इक्वेशन न गोटे रूट्स लेट इट बी अल्फा काहारु का भीतर लाइज करबो एटलीस्ट वन रूट्स अल्फा ओपन इंटरवल ए बी भीतर लाइज करबो. क्लियर? देन तमे 0 पुट कले 1 पुट कले 2 पुट कले एंड सो ऑन से सब पुट कर देखिबा बस जे कोन दुटा को प्रोडक्ट कले कोन आस्तु दरकार मल्टीप्लिकेशन टा नेगेटिव आस्तु दरकार. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 goes the sides of a right angle triangle are in the ratio 3:4:5. A theta is adjacent to the smallest side, then find the ratio of sin theta, cos theta, tan theta. मतलब कौन कहछि theta टा को एंगल हबो is the adjacent to the smallest side. जेहेतु एटा गोटे ट्रायंगल सपोज हम गोटे ट्रायंगल ड्रा करनबा एटला ट्रायंगल तार रेशियो के दिछि ट्रायंगल मानकर साइड रेशियो 3:4:5. तो हमें छोटो साइड टा को नेगले 3 बड़ साइड टा को नेगले 4
ए साइड को निकले 5 तो जेहेतु स्मॉलेस्ट साइड के लेट मी नेमिंग दे दवा ए बी सी स्मॉलेस्ट साइड टा होची ए बी तेणु तार एडजेसेंट एंगल टा को हमें के दे दवा थीटा क्लियर देन पचे sin थीटा ताले एटा हमें जदी sin थीटा वैल्यू फाइंड आउट करबा के सो p by h फॉर्मूला कोन एटा है जो p है जो 4 दैट इज 4 by 5 सिमिलरली cos थीटा फॉर्मूला कोन b by h एठी केते पाई जिबा 3 by 5 सिमिलरली tan थीटा वैल्यू केते पाबो tan थीटा वैल्यू आछो p by b दैट इज 4 by 3 क्लियर तो हम पचे अछि कार रेशियो sin थीटा cos थीटा tan थीटा रेशियो ताले sin थीटा केते असला 4 by 5 cos थीटा केते असला 3 by 5 एवं tan थीटा केते असला 4 by 3 ओटे इटा तो फ्रैक्शन नहीं तो फ्रैक्शन को अवॉइड करिले हम कोन करिया सबुथरे 15 मल्टीप्लाई करनबा क्लियर सबुथरे में 15 मल्टीप्लाई करले केते आसीबो 5 3 दैट इज 12 एटा केते आसीबो 9 एटा केते आसीबो 20 hence it will be 12:9:20 that is option 4 will be the right answer clear now come to the question number 18 कोन कहिचे area of the triangle formed by the points ताले कोन कहिचे तीनटा कोऑर्डिनेट्स दे देछि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के देछि 0 0 एटा होछि 0 0 सेकंड कोऑर्डिनेट के देछि 0,4 1 2 3 4 एट कोऑर्डिनेट देछि केते 0,4 और आउट कोऑर्डिनेट के देछि 3,0 1 2 3 ए कोऑर्डिनेट देछि 3,0 क्लियर तुमको ए तीनटा कोऑर्डिनेट ने हम वर्तमान गोटे रेक्टेंगल फॉर्मेशन करबा रेक्टेंगल फॉर्मेशन सॉरी गोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन करबा ताले को ट्रायंगल टा आसीबो ए ट्रायंगल टा आसीबो एस और नो एउटिक लेंथ केते 3 एउटिक लेंथ केते 4 ताले एटा वर्तमान कोन हेला गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल एरिया कोन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एस और नो हाफ इनटू बेस केते आसीबो 3 हाइट केते देछि 4 गोटे सॉल्व करले केते आसीबो 6 स्क्वायर यूनिट क्लियर या तो हमें आउट फार्मूला जो पढ़ितले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोन हाफ इनटू x1 होल इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इनटू y1 माइनस y2 ए फार्मूला को मध्य यूटिलाइज करिकि हमें सॉल्व करि परिबा क्लियर किन हमें देखु कोन ग्राफिकल देखु देउचे आर डिस्टेंस इज 3 जेहेतु ए पॉइंट एउटे ट्रायंगल जोटी फॉर्मेशन होउची आर कोऑर्डिनेट होउची केते 3 0 एवं आर होउची केते 0 4 तमने एउटे डिस्टेंस केते जो 3 ए डिस्टेंस केते जो 4 तो गोटे कोन जितले गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हम फार्मूला जानचे कोन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट क्लियर now come to the question number 19 को कहियो we have to find out the integration of integration 0 to 1 upon 1 plus x dx clear so 1 plus x को t नै गले हमर केते आछो dx equals to dt integration 0 to 1 dt upon t that is integration 0 to 1 ln t that is integration 0 to 1 sorry ln t लिमिट के देछि 0 to 1 that is ln t जगह तार वैल्यू पुट कर दबा 1 plus x limit varies from 0 to 1 तो upper limit minus lower limit put करले केते आसीबो ln 1 plus 1 that is ln 2 minus ln 1 तो ln 2 minus log 1 वैल्यू केते 0 तो आंसर आछो केते ln 2 hence option 1 is the right answer clear log 2 जोटा आछी log असले कोन जो log base e हेले ही आमे त कोन को ln ही को clear now come to the question number 12 sorry question number 20 कम कहिची कार वैल्यू फाइंड आउट करबा tan 64 into sin 72 होल डिवाइड बाय cos 18 into cot 26 यार वैल्यू हमको फाइंड आउट करियो अछि केमते फाइंड आउट करबा न्यूमरेटर जहा अछि 28 तक हमें एज यूजुअल रखिनबा क्लियर केते अछि tan 64 into sin 72 क्लियर तो डिनोमिनेटर के अछि cos 18 को हम लिखबे रे केते cos 19 minus 64 yes or no similarly cos 18 को हम लिख परिबा cos 19 minus 64 similarly cot 26 को लिख परिबा cot 90 minus 72 yes or no clear लिख परिबा नहीं कहे 90 minus 64 लेकेते जो 18 एवं 90 minus 72 लेकेते जो 26 90 minus sorry एटा को हम एमते लिखिबा cos 18 जे cos 18 को हम लिख फेरे केते cos 90 minus 72 क्लियर कहना 90 रु 72 वाले ही केते 18 आसीबो एवं cot को लिख फेरिबा 90 minus 72
cot 26 अछि सो cot 26 टा केते आसीबो 90 माइनस 64 क्लियर cot 26 टा आसीबो केते cos 90 माइनस 64 क्लियर तो बर्तमान एटा केते आसीला tan 64 into sin 72 upon cos 90 minus theta जे केते sin theta that means sin 72 degree into cot 90 minus theta जे केते tan theta that is tan 64 degree tan cancel sin cancel answer will be 1 clear so thank you everyone एही वीडियो रे हम क्वेश्चन नंबर 11 रो 20 पर्यंत डिस्कशन करले नेक्स्ट वीडियो रे हम क्वेश्चन नंबर 21 रो 30 पर्यंत डिस्कशन करबा